So guys, hello everyone. I hope that I am audible and the screen is clearly visible to every one of you. Hello Lloyd, hello Prashant, how are you guys doing? I hope that the screen is clearly visible as well as you are able to hear me out, right? Okay, so I'm active in the chat box throughout the session. Whatever you want to ask from me, then you can just drop the comments there. And now we will start the session. I hope that slowly the people will start to come in. Okay, so we are going to discuss about stocks, index, and all these things. Okay, so first of all, let us see what we have decided for tomorrow. So tomorrow we are expecting the markets to be volatile. Okay, and tomorrow is going to be the expiry for Nifty as well as Bank Nifty, because we are going to have a market holiday on 11th of April. Okay, so I hope that everyone is clear about these things, that 11th is going to be a market holiday, so we are going to have both the expiries for Nifty and Bank Nifty tomorrow only. So let us start with the session now. Okay, let us see how the global markets are doing. So global markets are trading in red today. There is some sort of a correction going on in the US 30 and S&P 500. Okay, तो थोड़ा सा अभी नीचे चल रहे हैं US markets, and definitely if they close down today तो इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा and we may see a gap down opening. Okay, we may see a small gap down opening tomorrow. Today I have three stocks in my watch list. You can see these three stocks. The first one is Steel Authority of India Limited, which is SAIL. The second one is Nalco, National Aluminium, and the third one is NBCC. So why we have selected these three stocks for our analysis today? तो लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, जब से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, ओके, इंडिया में न्यू फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल के बाद ये दो जो सेक्टर्स हैं हमारे, मेटल्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन इज बेसिकली द रियलिटी सेक्टर. यहाँ आप स्टॉक्स देख सकते हैं, इस सेक्टर में जो भी आते हैं द स्टॉक्स आर फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर. तो रियलिटी सेक्टर और मेटल सेक्टर ने हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है. In this financial year, we are seeing that these two sectors are giving us quite good movements. Okay, अब लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में कि इलेक्शन से पहले कौन से ऐसे PSU स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. अब हमने ये सेक्टर्स पहले तो समझें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनफ्लोज अभी अच्छे आ रहे हैं. So the first one is metals. Metals काफ़ी bullish लग रहे हैं. And the second one is construction, which is basically reality sector. ठीक है, तो अभी हमारा जो NBCC स्टॉक आता है वो कंस्ट्रक्शन रियलिटी स्पेस में ही आता है. जो बाकी के दो स्टॉक्स आते हैं वो मेटल स्पेस में आते हैं. अब आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन में समझा देता हूँ इन स्टॉक्स का. ठीक है, लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो सेल है दैट इज ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे लोज और हाईज शिफ्ट हो रहे हैं अभी. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है एक सेल में. अच्छा, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बनी थी इसका ब्रेकआउट हुआ है, फिर थोड़ा सा पॉज मिला और अब कंटिन्यू कर रहा है. तो आज की क्लोजिंग जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग्स ऑन दिस स्टॉक है. अभी स्टॉक काफ़ी बुलिश लग रहा है, एंड बिकॉज द मेटल सेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग बुलिश सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस FY, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली सेल इज़ वन सच पिक जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है. तो यू कैन वॉच सेल. सेल इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड राइट नाउ. लेट्स टॉक अबाउट नेशनल एल्यूमिनियम. सो दिस इज़ नेशनल एल्यूमिनियम. आप देख सकते हैं कि अभी एक सॉलिड ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, काफ़ी सॉलिड ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में आफ्टर कंसोलिडेशन एट द बॉटम. तो यहाँ पे बॉटम पे थोड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, फिर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाता है. अभी यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी और उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है. सो दिस स्टॉक इज़ ब्रेकिंग ऑल द पैरामीटर्स राइट नाउ, और ये स्टॉक काफ़ी बुलिश लग रहा है हमें. नेशनल एल्यूमिनियम, सो दिस इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स विच बिलोंग्स टू द मेटल सेक्टर. यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% ये ऑलरेडी बढ़ चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, एंड लॉट्स ऑफ रैली स्टिल पेंडिंग. अभी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि और अपसाइड मूव दिखा सकता है.
सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड पिक कि हमने एक और स्टॉक जो आपके लिए पिक किया है, दिस इज नेशनल एल्यूमिनियम. अभी आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी दिस इज ब्रेकिंग ऑल द रेजिस्टेंसेज आर बीइंग ब्रोकन बाय नेशनल एल्यूमिनियम. अभी जो रेजिस्टेंस है पिछले 15 साल की रेजिस्टेंस, दिस इज अ 15 ईयर रेजिस्टेंस and the stock is able to cross this level, so definitely lots of upside possible in this stock. Okay, now let's talk about NBCC, which is basically in the construction and the reality space. तो NBCC is trading at a really important level on the monthly time frame. भी आप देख सकते हैं काफ़ी important level पे ही ट्रेड कर रहा है, और इस लेवल के आसपास वी आर सीइंग कि एक पुल बैक भी आया था, एक पुल बैक भी हमको देखने को मिला था, और उसके बाद अब ब्रेकआउट वापस से हो रहा है स्टॉक में, ब्रेकआउट की टेरिटरी पे ये जा रहा है. सो डेफिनेटली एनबीसीसी इज़ वन सच स्टॉक जो सेक्टर वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें. और मैंने आपको इस वीकेंड की एनालिसिस में भी एनबीसीसी दिया है. सो डेफिनेटली दिस इज़ वन सच स्टॉक जिसको आपको वॉच करना चाहिए. डेफिनेटली बहुत बढ़िया लग रहा है. अभी एनबीसीसी इज़ ऑल्सो वन सच स्टॉक इन द पीएसयू स्पेस जो हमको काफ़ी मूव दिखा सकता है. अब गाइज बिकॉज आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इलेक्शन से पहले पीएसयू कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में, सो दीज आर 3 such stocks which I believe can show us good upside technically and fundamentally. जो अभी इन स्टॉक्स में चल रहा है that is very positive. और सेक्टर वाइज भी इस सेक्टर में हमें अच्छे फ्लोज देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए 3 स्टॉक्स ऐसे रहते हैं हमारे जो डेफिनेटली हमारे वॉच पे होने चाहिए कॉन्स्टेंटली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंडेक्स में हमारा व्यू है कल वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट, तो हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं. एंड कभी भी जब हमारा व्यू वॉलेटाइल होता है किसी भी एक्सपायरी में, तो हम किस टाइप से हमारा माइंडसेट बना के चलते हैं फॉर दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग सेशन. एंड डेफिनेटली गाइज आप सबके मैं कमेंट्स भी डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा हूँ. सो इफ़ देयर इज़ एनी डाउट इन दी एनालिसिस और एनी अदर थिंग देन डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप दैट वन इन द कमेंट सेक्शन. अब निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग. तो कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला था हमें. ओके, वीक स्टार्टेड एंड वी गॉट अ गुड ब्रेकआउट. ठीक है, डेफिनेटली रोहन आई विल प्रोवाइड यू द व्यू फॉर बेल. जस्ट लेट अस फिनिश द एनालिसिस. एक बार एनालिसिस फिनिश हो जाएगा तो देन डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड माई व्यू ऑन बीईएल. अब लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी. वॉलेटाइल सेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बायस्ड होने का कोई रीज़न बचता ही नहीं है. वी शुडेंट बी बायस्ड अबाउट द डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग सम वॉलेटाइल एक्शन. तो जब भी हम वॉलेटाइल एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट्स में, तो व्हाट वी बिलीव इज़ कि हमें लेवल्स क्लियर होने चाहिए जहाँ पे हम अटेम्प्ट्स लेंगे. और जब तक हमें लेवल्स क्लियर नहीं होंगे, हमें ये नहीं पता होगा कहाँ पे हमें एक्चुअली अटेम्प्ट लेना है. जब मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम अटेम्प्ट कहाँ लेने वाले. ठीक है, so now when you're selecting these 3 stocks, do you check the delivery? Basically I'm not checking the delivery percentage because I'm selecting these stocks for very short term. I'm thinking to hold these for basically 10 to 20% moves. So as of now I'm not checking the delivery percentage, but yes, if you can check that delivery percentage, it will be definitely good. अच्छा होगा मीन्स इट इज़ वन मोर फैक्टर और पैरामीटर विच यू कैन ऑलवेज सी एंड रिलाई अपॉन. सो अपार्ट फ्रॉम द चार्ट्स, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल व्यू पॉइंट, फ्रॉम द फंडामेंटल व्यू पॉइंट, फ्रॉम द सेक्टोरल व्यू पॉइंट, अगर आप डिलीवरी डेटा भी चेक करोगे, दैट इज समथिंग विच कैन हेल्प यू आउट. सो इट्स गुड इफ यू आर चेकिंग. Right now I'm not checking because I include these parameters whenever I am preparing reports for some sort of investment stocks. But abhi my view is to hold these stocks for a short to medium term time frame and then try to make some good 20-25% returns in these stocks. बेसिकली टिल द इलेक्शंस आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पे मोमेंटम है, कहाँ पे कैप्चर करके जल्दी से पैसा बनाया जा सकता है. ओके, बिकॉज वी बेसिकली डोंट नो लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दीज इलेक्शंस एंड पोस्ट इलेक्शंस, कि हमें क्या मूव देखने को मिलने वाला है, वेदर द मार्केट्स विल करेक्ट और वी विल सी द कंटिन्यूएशन ऑफ अ बुल रन. So definitely this is a great time to scalp out or basically try to make some good profits in the shorter term. अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने का टाइम है बिकॉज डेफिनेटली जो इलेक्शंस के बाद हमें मूव्स मिलेगी उसके बाद हमारे पास और कैपिटल होना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रेड करने के.
So now the time is for creating some short term profits on the capital, and I believe आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे. You're not trying to make some big investments in the market, or you're trying to some uh, means expose some big amount of capital into something, because basically everything is risky. We have a lot of elections this year, and a lot of uncertainty is also revolving around the markets कि after elections or during these elections क्या market overvalued हो जाएगा या we will have some fair value. तो इसीलिए आई बिलीव कि आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मार्केट को देखना चाहिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडेक्स. तो इंडेक्स पे दिस लेवल इज़ अ वेरी गुड लेवल फॉर मी. मैंने आपको कल भी बताया था दैट दिस लेवल इज़ अ वेरी गुड लेवल फॉर मी. ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो अगर मार्केट मुझे कल यहाँ पे आके टैप इनटू करते हुए दिखता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगी तो आई विल ट्राई टू बाय द मार्केट्स. ठीक है, बाय द मार्केट्स फॉर अ लेवल ऑफ 22,700. 22,700 मेरा टारगेट होने वाला है फ्रॉम दिस लेवल. इस लेवल से जो भी रिवर्सल मैं प्ले करूँगा वो एटलीस्ट आई विल ट्राई टू कैप्चर दिस 100-120 पॉइंट मूव फ्रॉम दिस लेवल बेसिकली. सो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है मेरे लिए. यहाँ से अगर कोई रिवर्सल दिखता है तो डेफिनेटली दैट विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल, एंड इसको कैप्चर करने की हम लोग कोशिश करेंगे. Now let's talk about कि what can be a selling opportunity for tomorrow. Just the vice versa, जो हमारा टारगेट है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी होने वाला है. तो ये जो लेवल है, दिस लेवल, ओके, दिस लेवल ऑफ 22,700 710, ये बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस है. ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, दिस लेवल, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल. ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं जो आज पहली कैंडल का क्लोजिंग है. ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की जो क्लोजिंग है, यहाँ पे मुझे एक अच्छा सेलिंग जोन दिखाई दे रहा है अभी. अगर यहाँ पे हमें मार्केट टैप इनटू करता हुआ दिखता है आइदर थ्रू अ गैप अप और आफ्टर द ओपनिंग, यहाँ से रिवर्स करता है, तो हम फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढेंगे फॉर 100 और 120 पॉइंट्स. ठीक है, फॉर 100 और 120 पॉइंट्स वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी. तो ये मेरा एक लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है. ये वाला लेवल हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है. अब अगर इसके नीचे जाता है तो लेट अस सी कि कुछ मूव अगर हम कैप्चर करेंगे या नहीं, या इसके ऊपर जाता है तो हम ट्रेड करेंगे या नहीं. ये हमारे जो लेवल्स हैं ये ट्रेडेबल है. इसके अबव या बिलो हमको उसी टाइम प्लान करना पड़ेगा कि लाइक हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग. ठीक है, अदरवाइज इस लेवल से हम बाइंग करेंगे, इस लेवल से हम सेलिंग करेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी आर प्लान फॉर टुमारो. ये एक प्लान होना चाहिए हमारा, बिकॉज मार्केट मिडल में बंद हुआ है. इफ़ इट ट्राइज टू गो अप आफ्टर ओपनिंग तो यहाँ से सेलिंग मिलेगा, अगर नीचे जाएगा पहले तो बाइंग मिलेगा. सो डेफिनेटली इस प्लान को आप ट्रेड कर सकते हैं. निफ्टी पे एक अच्छा प्लान है. यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर्स बाइंग भी कर सकते हैं. ठीक है, और अगर शॉर्ट साइड ट्रेड मिलेगी तो फ्यूचर्स को सेल भी कर सकते हैं. लेवल्स एक बार और मार्क कर देता हूँ आप लोगों के आगे ताकि आपको याद रहे. सो दिस इज गोइंग टू बी द लेवल 1 विच इज़ गोइंग टू बी द सेलिंग लेवल गोइंग फॉरवर्ड. ये हमारा सेलिंग लेवल होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आर बाइंग लेवल. दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द बाइंग लेवल. तो ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए. अब यहाँ पे आपको एक्ट करना है ऑन द कॉल एंड पुट साइड अकॉर्डिंगली. Let's talk about बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में आई एम पर्सनली नॉट वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ, बिकॉज आज भी एक इनडिसाइसिव कैंडल मिली है ऑन द लेवल नियर ATH. ठीक है, कल दोजी मिला, आज भी एक कैंडल मिली है जो इनडिसाइसिव है. सो राइट नाउ आई एम नॉट इन अ मूड टू एक्ट. यहाँ पे मैं एक्ट नहीं करना चाहता एग्रेसिवली, बिकॉज यहाँ पे स्टांस थोड़ा क्लियर नहीं है अभी. यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्लियरली कि मार्केट्स कहाँ जाने वाले हैं. सो गाइज डेफिनेटली देयर आर टाइम्स जब आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ बेसिकली द टाइम फॉर वेटिंग. पेशेंस का टाइम होता है, आपको एग्रेसिवली एक्ट नहीं करना चाहिए. अभी मैंने आपको 1500 पॉइंट से ज़्यादा की मूव बैंक निफ्टी में कैप्चर करवाई है, अगर आपने मेरी एनालिसिस पे ध्यान दिया हो तो. निफ्टी में भी आई हैव हेल्प्ड यू गाइज कैप्चर ऑल दीज मूव्स. एक बार हम देख लेते हैं कि हाउ आई हैव हेल्प यू आउट. एक बार लेट अस जस्ट सी दी एनालिसिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी मार्च 31 को ही डाला था कि निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 22,875 टू 22,900. अब ये टारगेट हमारा ऑलमोस्ट अचीव हो गया है. आप कह सकते हैं कि या तो थोड़ा सा बचा है जो अचीव हो जाएगा. और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं मैंने आपको टारगेट दिया था 48,500 का फ्रॉम अ लेवल ऑफ 47,000. यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैंने आपको बता दिया था कि इतना मूव तो आ जाएगा मार्केट में.
सो डेफिनेटली जिन्होंने स्विंग मूव्स अभी मार्केट में कैप्चर कर लिए हैं, अभी उनका टाइम है वेट करने का गाइज. हमेशा वी कांट एक्ट ऑन द मार्केट. इट्स नॉट एवरी टाइम कि हम लोग एक्ट करने वाले हैं, बिकॉज गाइज 1,000-1,500 पॉइंट की मूव कैप्चर हुई है. अब हमें समझना पड़ेगा नेक्स्ट 1,000-1,500 पॉइंट कहाँ हिलने वाला है. उसके अकॉर्डिंग ही वी विल ट्रेड इन इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, वट एवर. ठीक है. तो बैंक निफ्टी में वी आर स्टिल नॉट क्लियर बिकॉज अभी इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रही है. तो आई विल सजेस्ट नॉट टू एक्ट. एग्रेसिवली एक्ट मत करो. वॉलेटिलिटी जितनी अच्छी लगती है उतनी ख़राब भी हो जाती है. एट टाइम्स इट टेक्स अवे आवर कैपिटल एज वेल. ठीक है. इसके अलावा लेट्स आई होप द वॉइस इज क्लियर. इफ द वॉइस इज नॉट क्लियर प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. Okay, Shubham. So, are you not able to hear the audio, or is it just you who is not able to hear the audio? Because I don't think the other ones are saying anything on that aspect. So, basically, if you are the one who is not able to listen the audio, then just check at your end as well. Because I believe that the other people are able to hear me properly. So if they are not able to hear me properly, just let me know. Okay, just let me know. Please don't be quiet about it. Just let me know. Let's talk about Nifty. So Nifty guys, आज एक pause candle हुआ है हमारा. एक pause candle बना है आज. Pause candle is basically after the breakout. We are okay. Thanks for letting me know. Okay. So after the pause candle for the means last time we got a good breakout. Yesterday we got a breakout of this candle. Today we are getting a pause. Now we have to see what is going to happen. I believe कि अगर हमारा 580 वाला सपोर्ट टेस्ट होता है मार्केट में, वी आर गोइंग टू सी गुड बाइंग. इस लेवल से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है. तो यहाँ पे मे बी इवन आई ट्राई टू गो फॉर अ स्विंग बाय भी ट्राई कर सकता हूँ. अगर अच्छा सेटअप बनता है तो हो सकता है फिर यहाँ से एक नया हाई मिले हमें 23,000 का. तो एक लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज. इस लेवल को मिस मत करना. यहाँ से अगर मूव देखने को मिल रही है तो ट्राई टू ट्रेल दैट मूव. अगर यहाँ पे आ रहा है पहले मार्केट तो ट्राई टू सेल द मार्केट एंड स्कैल्प आउट द 100 पॉइंट्स मूव ऑन द डाउन साइड. निफ्टी का आई होप यू गाइज आर क्लियर. एंड बैंक निफ्टी आई ऑलरेडी इन्फॉर्म. मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा अभी ये रेंज थोड़ी सी बन रही है मार्केट में. इस रेंज में आई डोंट वांट अ ट्रेड. ठीक है, मैं ट्रेड नहीं करना चाहता. मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है. अगर इस रेंज के बाहर मार्केट निकलता है देन डेफिनेटली आई विल ट्राई कुछ एग्रेसिव ट्रेड्स मैं करूँ. अगर इसके नीचे भी जाता है तो कुछ एग्रेसिव ट्रेड करूँ. इस रेंज के विद इन आई विल ट्राई टू जस्ट बाय द सपोर्ट एंड सेल द रेजिस्टेंस. बेसिक ट्रेडिंग आई विल ट्राई टू डू अ बेसिक ट्रेडिंग. ठीक है, इस रेंज में जब तक है आई विल ट्राई टू बाय द सपोर्ट एंड सेल द रेजिस्टेंस. नाउ आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर डाउट्स बिकॉज हम लोग वो क्लियर करेंगे. उसके बाद we'll see if there is anything for discussion, otherwise we'll close the session. So I think I have to give my view on BEL. I hope Rohan you are there to hear about this. So let's talk about BEL now. BEL के बारे में हम लोग बात करते हैं और BEL के बाद जो भी आप डाउट्स देंगे we'll talk about them. So this is BEL. BEL is looking good as of now. We have got a good breakout and after that we are also getting a good continuation. So BEL I informed you guys कि अच्छा ही है. अभी I think थोड़े दिन पहले भी आप लोगों ने पूछा था. It's continuously going and creating newer highs every day. बढ़िया है. BEL is good enough. I think it can move higher. We have to see what the other defense stocks are doing. अगर defense theme अभी और bullish लग रही है तो maybe we get to see some new highs in this. ठीक है, sideways to bullish ही रहेगा अभी. Let's see HAL. So HAL भी pause में आ चुका है. एक यहाँ पे जब भी आप BEL को देखो तो आप रिलेटिव अदर स्टॉक्स को भी देखा कीजिए बिकॉज दिस इज़ अ थीम गाइस. अगर मनी कहीं और सेक्टर में जाएगी तो यहाँ से निकलेगी भी. डोंट एवर बिलीव कि सारे स्टॉक्स एक टाइम पे चलते जाएंगे. नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता है. गोल्ड इज मूविंग एंड क्रिएटिंग न्यू हाइज, सिल्वर इज क्रिएटिंग न्यू हाइज, सम अदर एसेट इज क्रिएटिंग न्यू हाइज, सम सेक्टर्स आर क्रिएटिंग न्यू हाइज. तो गाइज कहीं से तो पैसा निकलेगा ना, बिकॉज टू गो एंड फ्लो इन टू दी अदर सेक्टर कहीं से तो कोई आदमी डिसइन्वेस्ट भी करेगा.
सो बेसिकली अगर वी आर बिलीविंग कि मेटल्स और बढ़ेंगे, दूसरे सेक्टर्स और बढ़ेंगे, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी कि डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा हॉल्ट आएगा. So be very fast to identify these trends, because if you're not very fast to understand all these things, definitely आप lot of times you get stuck at the higher levels. आप stocks में higher levels पे stuck हो जाओगे and फिर उसके बाद वो भाव आने में काफ़ी time लग जाएगा, आप साल भर तक wait करते रह जाओगे. So definitely watch all these things because these actions are important to understand. अभी आप देखेंगे तो IT stocks में कहाँ inflow हो रहा है. हैव यू हर्ड फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज कि कोई आईटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया चल रहा है? नहीं गाइज, आईटी स्टॉक्स चल ही नहीं रहे पिछले कुछ दिनों से. आप देख सकते हैं इन्फोसिस इज एट 1494 गाइज. आप देखिए, जब निफ्टी पिछली बार हाईज बना रहा था 2023 आई थिंक 2021 में 21-22, तो आईटी स्टॉक्स की वजह से बना रहा था. नाउ द इंडेक्स इज एट हाईज ऑन इन्फोसिस, तो आप देख सकते हैं हाईज से कितना दूर है. लाइक वी कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट. लेट अस जस्ट सी कि इन्फोसिस कहाँ पे अभी चल रहा है. सो इन्फोसिस का हाई है ऑलमोस्ट एट दिस लेवल. ठीक है, इन्फोसिस हाई इज एट दिस लेवल अराउंड 2000. Infosys is trading at near 1500, which is 25% down from its highs. ठीक है, and if you know Infosys is one of the highest weighted stocks in India in Nifty. ठीक है, निफ्टी हमारे डेली हाई बना रही है. निफ्टी स्केलिंग टू इट्स हाइज डेली. बैंक निफ्टी स्केलिंग टू इट्स हाइज डेली. निफ्टी मेटल सेक्टर इज स्केलिंग टू इट्स हाइज. निफ्टी रियलिटी सेक्टर इज स्केलिंग टू इट्स हाइज. बट वाई नॉट आईटी? बिकॉज गाइज आईटी सेक्टर में जो आउटफ्लो है वही तो हमें दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है. जब आईटी स्टॉक्स वापस से चलने लगेंगे तो डेफिनेटली कोई और सेक्टर फिर आपका चलना बंद हो जाएगा. तो दिस इज हाउ द मार्केट बेसिकली वर्क्स. तो डेफिनेटली जब भी आप इन स्टॉक्स को देख रहे होते हैं, डिफेंस सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, हमेशा एक चीज़ आपको समझनी है कि कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है. आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है और फिर इनफ्लो कहाँ पे हो रहा है. अगर आपको आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज समझ नहीं आएंगे तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू राइड द ट्रेंड. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको समझ नहीं आएगा मुझे कट कब करना है. बिकॉज बेसिकली देर आर मेनी पीपल हु गेट इन टू अ ट्रेंड में जाना तो आता है, इट्स लाइक चक्रव्यूह में घुस तो गए, बट आपको बाहर आना नहीं आता. ठीक है, सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड एग्जिट अच्छी नहीं मिल रही है तो गाइज इट्स मोर अबाउट द एग्जिट. एग्जिट ही अच्छी नहीं होगी तो प्रॉफिट लॉक इन कैसे होगा? लाइक हाउ यू विल बी एबल टू लॉक इन योर प्रॉफिट्स? जितनी भी मेहनत होगी वो वेस्ट हो जाएगी. सो इट्स ऑलवेज अबाउट द एग्जिट. एग्जिट अच्छे से करोगे तभी मार्केट में बने रहोगे. एंट्री इज गुड एंड एग्जिट इज नॉट गुड तो मज़ा नहीं आएगा. GMR इंफ्रा पे हम लोग बात करते हैं. GMR इंफ्रा. So guys, I think GMR Infra has been included in the portfolio by GQG Partners. So GQG Partners is one sort of a fund which I closely track. It has also included Bharti Airtel recently. तो ये जो फंड है इसकी एक्टिविटीज़ आई एम ट्रैकिंग कॉन्स्टेंटली बिकॉज द फंड इज़ परफॉर्मिंग क्वाइट वेल. इट्स अ fund based in USA. GQG Partners, you can search about it. Last year it made a record amount of profits in the Adani Group stocks. When there was a rumor about Hindenburg and all those things, then it made a huge profit from the Adani stocks. I'm tracking this fund from that time, and it has included GMR Airports Infra, this stock, in its portfolio. So definitely we have to study about it. They are quite bullish on this stock. Okay, so definitely we have to study. I believe कि stock अच्छा चल सकता है because of the research. Okay, I believe the research was quite good. तो आप track कर सकते हैं. I believe stock अच्छा चल सकता है. This is a good stock. And for more information you can even read about what they have to say. जो GQG पार्टनर्स इस स्टॉक पे रिसर्च रिपोर्ट रिलीज हुई थी, यू कैन रीड अबाउट दैट एज वेल. उससे आपको और बेहतरीन से समझ आएगा कि हाउ दिस स्टॉक कैन मूव. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि और क्या डाउट्स हैं आप लोगों के. प्रशांत भाई सेइंग अबाउट MOL. सो लेट्स टॉक अबाउट MOL विच इज़ मेक मनी ऑर्गेनिक्स. Make Money Organics, I believe, is from the chemical sector, and right now we are not seeing anything in this sector. So, quite an avoid stance for this. What is the time we have to select while scalping? Basically, it depends a lot on your personality because trading is all about your schedule, your personality, your
thinking ability, your psychology. So it's quite a personal question. बट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि स्कैल्पिंग कैसे करनी चाहिए, तो आई विल टेल यू कि मेरे हिसाब से लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बिलीव इट. काफ़ी लोग आपको बोलेंगे मार्केट जब शुरू होता है तब मार्केट काफ़ी हिल रहा होता है, उस टाइम स्कैल्प कर लो, प्रॉफिट्स बना लो. लॉट ऑफ पीपल विल से कि क्लोजिंग टाइम पे अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, उस टाइम स्कैल्प करके कुछ निकाल लो. बट मेरे अकॉर्डिंग इफ़ यू ट्राई टू स्कैल्प आउट एनी गुड काइंड ऑफ स्पाइक्स बिटवीन 11 to 1, then it can be really good because movement थोड़ा सा फास्ट कम होगा and you will have the opportunity to understand कि मूव होने कहाँ वाले हैं. ठीक है. In the past I used to trade the moves between 9:15 to 11. पहले मुझे उस टाइम पे मूव्स अच्छी लगती थी, बट सिंस द मार्केट्स हैव चेंज्ड, द डायनेमिक्स हैव चेंज्ड सिंस द पास्ट 1 ईयर. अभी मार्केट्स बुलिश हैं फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, तो मुझे ऐसा लगता है 11 के बाद ट्रेडिंग थोड़ा बेटर रहती है. एंड उससे पहले थोड़ा सा जो फास्ट मूव्स होती है उसमें एसएल काफ़ी ले जाता है मार्केट. सो आई बिलीव आफ्टर 11 इफ देर इज एनी मूव, इफ देर इज एनी स्पाइक, अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे उसको तो अच्छा पैसा बना सकते. डीमार्ट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट रिसेंटली. डीमार्ट में अभी एक CLSA का रिपोर्ट भी आया था कुछ टाइम पहले, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड रिपोर्ट. द कंपनी हैज़ बीन स्केलिंग और increasing the number of stores consistently, so stock is really good. DMart is good. Any kind of a correction or we can say any kind of a dip in this stock can give us a buyable opportunity. So you can wait for any sort of a dip. यहाँ पे एक resistance अभी थोड़ा सा visible है. अगर यहाँ से आपको कुछ dip इसमें नज़र आती है, some sort of a correction and then continuation of a 5% correction, I believe is a good buyable dip in this stock. No, no, no. Yet not. We have created this YouTube live group, but definitely in the future, means very near future, we will create a group. Not as of now because I have some responsibilities to cover, but जल्दी हम बनाएंगे एक यूट्यूब लाइव मेंबर्स का ग्रुप. बट मुझे पता होना चाहिए गाइज कौन कौन रेगुलरली अटेंड कर रहा है. तो जब आई विल गेट अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 लाइव मेंबर्स जो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, देन मैं ग्रुप बना दूंगा एंड आपके साथ एक इंटरेक्शन मेरा फिर वीकेंड पे भी हो जाएगा. ओके, सो लेट अस गेट टू सम पॉइंट जहाँ पे 20 से 25 लोग कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे हैं. तो जब वो 20 से 25 लोग कंसिस्टेंटली अटेंड करेंगे, देन डेफिनेटली वी विल क्रिएट अ ग्रुप फॉर द यूट्यूब लाइव कम्युनिटी. फिर उनको मैं आई विल ट्राई टू मेंटोर दोज पीपल. ठीक है, उन लोगों को आई विल ट्राई टू हेल्प देम इन द मार्केट्स टू मेक सम प्रॉफिट्स एंड इम्प्रूव देयर साइकोलॉजी. अब गाइज एक एंट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं. दिस इज वन स्टॉक विच वी प्रोवाइडेड येस्टरडे. इट इज़ अ मोमेंटम स्विंग ट्रेड, दौलत एल्गोटेक. ओके, एंड वी मेड नाइस रिटर्न्स टुडे इन दिस, बट वी हैव नॉट बुकड दिस ट्रेड. अभी ये रनिंग ट्रेड है और हम इसमें वेट कर रहे हैं कुछ और मूव्स होगी. उसके बाद जब हमारा टारगेट अचीव होगा, देन डेफिनेटली वी विल बुक दिस वन. So this is one stock which we provided yesterday to our passive community as well as CosmoFeed platform members. And in just one day, we have got a good move in this. It was at one point of time 11 to 12% up today. But from the last hour, last 2 hours selling or profit booking, whatever we say in Nifty, ये थोड़ा नीचे आ गया. Now let's talk about Surya Roshi, which Prateek Bhai is asking about. 572. So we can say that the stock is at a nice level, but still is not giving us some convincing sign to take a position. If you are trying to make a short-term position or a momentum position, this stock does not look like a good setup to me. मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई डोंट ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म. तो अभी आई वोंट रिकमेंड कि इसको आपको शॉर्ट टर्म पे लेना चाहिए. डेफिनेटली हाई ऊपर आ रहा है, हाईज